Dear students, welcome to my channel Moral Teaching PNC. Today we will discuss some important short questions and long questions for second semester examination. प्रथम चैप्टर जार नाम हूँ इंडियन कन्स्टिट्यूशन बा भारतीय संविधान से विषय कौन कौन 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन एवं लंग क्वेश्चन माने 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन कौन आसीबो ताहा आमे डिस्कशन करबा। वीडियो भल देखा जाए फोन को लैंडस्केप मोड रखापी कहि फोन को लैंडस्केप मोड रखे तुम्हें मैंने सब लेखा एवं तुमको स्पष्ट देखा वीडियोटी। तो कि आसने आरंभ करवा आज वीडियो डिस्कसन करवा किसी शॉर्ट क्वेश्चन एवं किसी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो प्रथम विषय कौन कौन शॉर्ट क्वेश्चन आसीपर तामें आज कहवा। मुख्यतः 2टी पार्ट रु बेसी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आसो ताहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रीएम्बुल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बुल मान जो प्रस्तावना बा मुखबंध ता ऊपर क्वेश्चन आसीबो एवं कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर क्वेश्चन आसीबो। क्वेश्चन नंबर 1 होची व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान कौन बा कहले कौन बुझ यदि इंग्लिश रे आंसर लिखिबा एई भली हबो द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडरस्टैंडिंग्स and modes of behavior on the basis of which the government is constituted and run. The constitution specifies the areas of functions between the organs of the government. It also sets the mode of relationship between citizens and the state. तो पिले मान 2 मार्क का क्वेश्चन आसे नॉर्मली हमको 5 रु 6 धाड़ी भितर आंसर लिखा पड़े 30 टी शब्द मध्य आंसर लिखा पड़े। तो यही संविधान कौन यार उत्तर देम ओडिया लिखिबा। संविधान कौन बा संविधान कहले कौन बुझ संविधान हेउची एक नियम एवं बुझावना एवं आचरण धारा जहाँ आधार रे सरकार गठित एवं परिचालित हेउची। संविधान सरकार अंग मध्य कार्यर क्षेत्र निर्दिष्ट करे। यह मध्य नागरिक एवं राज्य बा देशर सरकार मध्य संपर्क स्थापन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। एबे आसु जानिबा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आंसर हबो ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ए बॉडी ऑफ रिनाउंड पर्सन्स हु आर एंगेज इन डिस्कशन ऑफ डिबेट्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड देन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज आर रिटेन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यार उत्तर जब ओडिया लिखा पिले यही हम विधानसभा कहले कौन बुझ उत्तर होची एक विधानसभा होची प्रसिद्ध व्यक्ति विशेष एक संस्था जो माने आलोचना वितर्क एवं निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया रे नियोजित अटंती एवं तापरे संविधान प्रस्तुत करिथा। विश्व रे अधिकांश देशर संविधान विधानसभा द्वारा लिखित। देन क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मच टाइम was taken by Constituent Assembly to write the Constitution। संविधान लिखिबा पई विधानसभा द्वारा केते समय निया जाइथिला। आंसर इज द Constituent Assembly to write the Indian Constitution was constituted in 1946। हमर भारत संविधान लिखिबा पई Constituent Assembly गठन कराइथिला 1946 मसिया and it completed the work on 26th November 1949. So it took 2 years, 11 months and 18 days to complete the constitution of भारतीय संविधान लिखिया पाई विधानसभा द्वारा केते समय निया जाइतिला। उत्तर हेउची भारतीय संविधान लिखिबा पाई विधानसभा 1946 मसिया रे गठित करा जाइतिला एवं यह 26 नवेम्बर 1949 रे कार्य शेष करथिला। तेणु भारतर संविधान संपूर्ण करने को 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लगिगला। तापर आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्रीएम्बुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर होची ए प्रीएम्बुल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गिव्स द आइडिया ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट values,
philosophy and commitment of the constitution. Preamble helps in the interpretation of the constitution. ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ବା ମୁଖବନ୍ଧ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବନା ବା ମୁଖବନ୍ଧ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଂଶ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କର ରୂପ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାୟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ? How it performs its role for society? Answer होची, a constitution is fundamental law of the land. It can be defined as the body of rules, regulations and understandings on the basis of which state is constituted or governed. The constitution is also the instrument of realizing the aspirations of the people. It plays a vital role for society as it specifies the basic allocations of power in society. The constitution of a country indicates the framework of the government with the respective role of each organ of the government. The constitution influences society and in turn it is influenced by society. Indian constitution represents the ethos, values and preferences of Indian people and at the same time has successfully given the direction to Indian society to become a liberal, secular, democratic and modern society. The constitution plays this role in all societies. We can take the example of Chinese and Russian constitution also. ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ ପିଲେ ଏଇଭଳି ହେବ, ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମାଜ ପାଇଁ ଏହାର ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନର ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଭୂମିକା ସେଟା ଲେଖିବା। ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଦେଶର ମୌଳିକ ନିୟମ। ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶର ଗଠିତ ଏବଂ ଶାସିତ ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ନିୟମ, ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ବୁଝାମଣାର ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ସମ୍ବିଧାନ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସାକାର କରିବାର ସାଧନ। ଏହା ସମାଜରେ ଶକ୍ତିର ମୌଳିକ ଆବଣ୍ଟନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏକ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭୂମିକା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ସମ୍ବିଧାନ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନୈତିକତା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ପସନ୍ଦକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଉଦାରବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ତଥା ଆଧୁନିକ ସମାଜ ହେବାକୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ସଫଳତାର ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ। ସମସ୍ତ ସମାଜରେ ସମ୍ବିଧାନ ଏହି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନର ଭୂମିକା ଏଇଆ ହିଁ ଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅଧିକାର ରହିବା ସହିତ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ସ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। Constitution is in the form of a document written by a special constructed constituent assembly. Our Indian constitution is a written document. The constitution has its own utility and importance. Our constitution is a clear indicator of the jurisdiction or powers of a particular organ. There cannot be any ambiguity in our constitution. It can be explained easily. Indian constitution is available in the form of a document that is prepared by continuous discussion and debate and with due process of decision making. Yes, our constitution is prepared by a committee, by a team after a rigorous discussion, rigorous debates and decision making. ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ହେବ, ସମ୍ବିଧାନ ସରକାରଙ୍କ ଗଠନ ଏବଂ ଶାସନ ଧାରାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ।
संविधान एक स्वतंत्र भाव गठित विधानसभा द्वारा लिखित एक दलिल आकार संविधान निजस्व उपयोगिता और गुरुत्व रही आमर संविधान एक निर्दिष्ट अंगर अधिकार कि क्षमतार एक स्पष्ट सूचक आम संविधान में कौन अस्पष्टता हो पार ना यह सहजरे व्याख्या करा जाई पारे आम संविधान को यही भाव में लिखा जाइए ताकू जड़े साधारण नागरिक पढ़िले बुझीपार और अन्य को बुझाई पारे भारतीय संविधान एक डॉक्यूमेंट आकार रे उपलब्ध जहाँ क्रमागत आलोचना और वितर्क और निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया सहित प्रस्तुत नेक्स्ट क्वेश्चन राइट सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिले ए क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बढ़िया तो आम देखा write the some important functions of the constitution answer hochi as the constitution is a framework of government and embodiment of ethos values goals and commitments of the people it performs a number of functions for the society and the rulers that is government its main functions are number 1 the first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimum coordination and assurance amongst members of society. Constitutions provide authority to the government for framing rules, regulations, and their issuance and implementation for the purposes of main coordination among the people of the people and to establish discipline. Number 2, the second function is to provide the fair framework of government and decide the area of jurisdiction of each organ of the government to make the decisions about the people. It also decides how the government will be constituted. Number 3, the third function of the constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are not to be violated by the organs of the government and the people. Citizens are given 4 fundamental rights and that cannot be violated by the government. So these fundamental rights are given protections. Sorry, dear students, that is 4, not 4, that is 6 fundamental rights. Here, that is actually 6 fundamental rights, that is here that actually this will be 6 fundamental rights. Number 4, the fourth important function of the constitution is to ensure the fulfillment of the aspiration of the people and the governmental system. ये क्वेश्चन को जब ओडिया लिखा कौन हम संविधान किसी गुरुत्वपूर्ण कार्य उल्लेख कर उत्तर होची जेहेतु संविधान होची सरकार एक ढांचा एवं नैतिकता मूल्यबोध लक्ष्य एवं लोकों प्रतिबद्धतार परिचय यह समाज तथा शासक मान अनेक कार्य करें यार मुख्य कार्यगुड़िक होची एक नंबर एक संविधान प्रथम कार्य होची मौलिक नियमर एक सेट प्रदान करने जहाँ समाजर सदस्य मानक मध्य सर्वनिम्न समन्वय एवं निश्चिंतता अनुमति दिए नियम नियमावली एवं लोकमानक पाख्य मध्य मुख्य समन्वय रक्षा करने एवं अनुशासन प्रतिष्ठा उद्देश्य संविधान गुड़िक सरकार को क्षमता प्रदान करें। 2 नंबर संविधान द्वितीय कार्य होची सरकार ढांचा जोगाइबा एवं सरकार प्रत्येक अंगर अधिकार क्षेत्र निर्णय करने लोकों विषय रे सरकार किपरि गठन करेंगे ता मध्य निष्पत्ति नहीं। 3 नंबर संविधान तृतीय कार्य होची सरकार यार नागरिकों उपरे कौन लगाई पारिबे से किसी सीमा स्थिर करेगा यही सीमा गुड़िक सरकार अंग एवं लोकों उल्लंघन हेब नहीं। नागरिक मानक 6टी जगह 6टी हम 6टी अधिकार प्रदान करा मौलिक अधिकार यहाँ मजादार हेनी यहाँ मौलिक अधिकार
ଲେଖିଲା ବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଜରୁରୀ। 4 ନମ୍ବର ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୂରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଇଏ ଥିଲା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିପାରିବ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ସମ୍ବିଧାନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ସମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସମାଜ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ହାଉ ଇଟ୍ ପରଫର୍ମସ୍ ଇଟ୍ସ ରୋଲ୍ ଫର୍ ସୋସାଇଟି। ଦେନ୍ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ବା ମୁଖବନ୍ଧ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା କେତେ ସମୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ ୱାଜ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ବିଧାନସଭା କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଗଲା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଏଇ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିପାରେ, ଯାହାକି ଆମକୁ 250 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 5 ମାର୍କ ପାଇବାକୁ ହେଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଚାପ୍ଟର ଇଜ୍, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଏସେ ଅନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଏକ ରଚନା ଲେଖ ବା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖ, ଯାହାକୁ କି ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 200ରୁ 250 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଆନ୍ସର ପିଲେ ଏଇଭଳି ହେବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାପ୍ଟର 1ର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟାରୁ ପ୍ରାୟ ତୁମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ। ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋରାଲ ଟିଚିଂ ପିଏନ୍ସିକୁ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେ। ବା ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତଳୁ ତଳ ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାରର ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଚାପ୍ଟର 1 ଏବଂ ଚାପ୍ଟର 2ର କିଛି କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଏସେ ଅନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ ଫ୍ରମ୍ 26 January 1950. A special committee is gathered to draw outline the constitution. The constitution gives all the details related to what is legal and what is illegal in the country. In addition, with the enforcement of the constitution, the Indian subcontinent become the Republic of India. Besides, the drafting committee consists of 7 members that are supervised by Dr. B.R. Ambedkar. Moreover, the constitution helps in maintaining prosperity and peace in the country. Now, let us know the salient features of the constitution. Number 1, longest written constitution. The first thing that makes the Indian constitution different is its length. The Constitution of India contains a preamble. It takes 2 years, 11 months and 18 days to complete the draft of the Constitution. So students, note that thing, that is 2 years, 11 months and 18 days. এই পার্ট প্রায় কোশ্চেন আসে, প্রায় পচার দিয়ে এক্সামরে যা যে হাউ মেনি ডেজ ওয়াজ টেকেন টু রাইট দ ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুশন, দ্যাট ইজ 2 years, 11 months and 18 days. দেন আগুক প্রসিড করিবা। Number 2 silent feature होची the rigidity and flexibility of the Indian Constitution. Our Constitution is made in such a way that it is also rigid and is also flexible. The Constitution is hard as well as soft, both at the same time. While on one side, the supreme power needs to be followed carefully to maintain the law and order in the country, on the other side, the citizen can appeal to amend the outdated provisions. But there are certain provisions that can be easily amended and there are some that take a lot of time and resources to amend. Third feature is preamble. The original constitution does not have preamble, but it was later on added to the constitution. Also, it gives, that is, preamble gives a detailed account of the constitution's philosophy. The preamble states that
India is a socialist, secular, sovereign, and democratic republic. In addition, it believes in equality, justice, and freedom of its people. The constitution puts the welfare of its people first rather than the state. Number 4 feature होची a secular state. According to the Constitution of India, according to the Constitution, India is a secular country. That means it does not give special status to any religion. Anyone can perform his religion freely. The fifth salient feature is republic. It means a dictator or monarch does not rule the country. Moreover, it nominates and elects its head every 5 years. Sixth feature is fundamental policies. The constitution of the country states every fundamental duty of its citizens under it. These duties have to be followed by all the citizens of the country equally, whether it is a rich person or a poor one. Besides, these duties include the respect of national flag and national anthem, integrity and unity of the country, the safeguard of public property, and various others. Seventh feature is policy. This policy is simple guidelines to the state which ensure the development of its socio-economic via its policies. Then we will write the objective of the Indian Constitution. Firstly, we know what is Constitution, then the salient features of the Constitution. Then for long question, we have to write the objective of the Indian Constitution. The Constitution is the supreme law and it helps to maintain integrity in the society and to promote unity among the citizens to build a great nation. The main objective of the Indian Constitution is to promote harmony throughout the nation. The factors which help this objective are: first is justice. It is necessary to maintain order in society that is promised through various provisions of fundamental rights and directive principles of state policy provided by the Constitution of India. It comprises three elements, which is social justice, economic justice, and political justice. Second factor is equality. The term equality means no section of society has any special privileges and all the people have given equal opportunities for everything without any discrimination. Everyone is equal before the law. Next factor is the term liberty means freedom for the people to choose their way of life, have political views and behavior in society. Liberty does not mean freedom to do anything. A person can do anything but in the limit set by the law. Next factor is fraternity. The term fraternity means a feeling of brotherhood and an emotional attachment with the country and all the people. Fraternity helps to promote dignity and unity in the nation. Then finally, we should write the conclusion. In conclusion, the Constitution serves as guidelines for every citizen. Also, law and rule are completely defined in the Constitution. The head of the drafting committee, Dr. B.R. Ambedkar, has done a remarkable job that no one can forget. He and his team draft constitution that no other country has failed to do till date. Besides, the constitution has helped India to attain the status of the republic in the world. So dear students, it is the important question of the chapter 1 that is Indian Constitution. ये चैप्टर आउ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छी मुझे कहबी बर्तमान ये पार्ट 2 जो हम लॉन्ग क्वेश्चन जी पढ़ले ये कौन कौन एक मारे क्वेश्चन आसपे बेले बेले आसपे हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डॉक्टर बी आर आंबेडकर हो पारिबो हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेले आसे हु इज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑल्सो डॉक्टर बी आर आंबेडकर आ क्वेश्चन आसे केबे व्हेन द
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज केम इनटू एक्शन केबे कार्यकारी हेता दैट इज 26 जनवरी 1950 जदियो 26 नवेम्बर 1949 मसीह यहाँ लेखा सरी जाता संविधान किंतु लागू 26 जनवरी 1950 होता एबे जीवा नेक्स्ट पार्ट ऊपर यहाँ आम पढ़ले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ता ऊपर कौन क्वेश्चन आसपार एबे जानिबा नेक्स्ट पार्ट दैट इज प्रीएम्बुल एबे जीवा प्रीएम्बुल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ता मध्यरु कौन कौन क्वेश्चन आसपार ताले प्रीएम्बुल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बुल ऊपर कौन कौन क्वेश्चन आसपार प्रीएम्बुल कहले प्रस्तावना बा मुखबंध बा उपक्रमणिका जोटा आम बही रे कहूचे बही रे जमी आम कहूचे सूचीपत्र बा प्रिफेस मुखबंध सेमिति गोटे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बुल अच्छी ताले एथुरु कौन क्वेश्चन आसपार लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस और एक्सप्लेन द की वर्ड्स इन द प्रीएम्बुल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिला आम आग जाना प्रीएम्बुल कौन प्रीएम्बुल आमर जो भारतीय संविधान रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बुल केमिति पढ़ा जाए लिखा जाए तापर आलोचना करवा से प्रीएम्बुल कौन कौन की वर्ड्स कौन कौन इंपोर्टेंट वर्ड्स अच्छे वर्णना करवा गोटी गोटी की वर्णना करवा सो द प्रीएम्बुल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज रीड एज फॉलोज पिले यहाँ हूँ आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बुल टी तो यहाँ मतलब तुम प्रीएम्बुल पर लंग क्वेश्चन है निश्चय लिख यहाँ चित्र इमेजटा देती कि तुम खाता लिख यहाँ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बुल ये लिखा होता है प्रीएम्बुल इज रीड एज फॉलोज वी द पीपुल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integration of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So dear students, this is the preamble written has in our Indian Constitution. हमारा भारतीय संविधान रे प्रीएम्बुल ये लिखा है तो ये प्रीएम्बुल कौन कौन की वर्ड रहा मुख्य शब्द कौन रहा जानिबा शब्द रोची we the people it is the keyword and the sovereign it is another keyword and socialist it is another keyword secular democratic republic then justice liberty equality fraternity yes this is the keywords I mean प्रति कीवर्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन प्रति कीवर्ड विषय अल्प अल्प लिखा फ्राटर्निटी कौन इक्वालिटी कौन लिबर्टी कौन जस्टिस कौन सोवरिन माने कौन सोशलिस्ट माने कौन सिक्युलर माने कौन डेमोक्रेटिक विषय किसी लिखा रिपब्लिक विषय लिखा एवं वी द पीपल ऑफ इंडिया कहले कौन सिग्निफाई कर लिखा तुम गोटी गोटी की डिस्कसन में करवा एक प्रीएम्बुल भीतर मत क्वेश्चन आसपे जे प्रीएम्बुल को डेट टी मेंशन कराई से डेट हूँ दैट इज 26th day of November 1949 जो डेट रे ड्राफ्ट कमिटी द्वारा सबमिट करा जाइथिला हमर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटा को अडॉप्ट ग्रहण कराइथा सब मेंबर ताको ग्रहण करथिले अनअनमसली बिना द्विधारे ताको ग्रहण कराइथा दैट इज 26 नवेम्बर 1949 ततले लॉन्ग क्वेश्चन आछे प्रीएम्बुल ऊपर तो प्रीएम्बुल एमति लिखियो तो प्रतिटी कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करियो आसंतु फर्स्ट वर्ड दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया दिस वर्ड इंडिकेट्स द अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया sovereignty means the independent authority of the state
not being subjected to the control of any other state or external power. Then second term hochi sovereign. The term means that India has its own independent authority and it is not a dominion of any other external power. In the country, the legislature has the power to make laws which are subjected to certain limitations. The next term is socialist. The term means the achievement of socialist ends through democratic means. It holds faith in a mixed economy where both private and public sectors coexist side by side. And this socialist word was added in the preamble by 42nd Amendment Act. Example question ଆସିବ the word socialist is added to the constitution in which year? That is 42nd Amendment Act 1976. When constitution was made, socialist word was not there. This word is added later. Next is secular. The term means that all the religions in India get equal respect, protection and support from the state. This secular word also added later, that is by 42nd Amendment Act 1976. Then democratic. Democratic means that the term implies that the Constitution of India has an established form of constitution which gets its authority from the will of the people expressed in an election. Then next term is republic. Next term is republic. The term indicates that the head of the state is elected by the people. In India, the president of India is the elected head of the state. The term indicates that the head of the state is elected by the people. Then next term होची एटा रिपीट हो जाइए रिपब्लिक लिखला बेले रिपीट हो जाइए तो जोटा लिखो गोटे लिखिबो रिपब्लिक रिपब्लिक बारंबार रिपीट हो जाइए दिथर. देन नेक्स्ट वर्ड होची justice. It is necessary to maintain order in society, that is promised through various provisions of fundamental rights and duties provided by the Constitution of India. It comprises three elements, which is social justice, economic justice and political justice. Social justice means that the Constitution wants to create a society without discrimination on any grounds like caste, creed, gender, religion, etc. Economic justice means no discrimination can be caused by people on the basis of their wealth, income and economic status. Every person must be paid equally for an equal position and all people must get opportunities to earn for their living. Political justice means all the people have an equal, free and fair right without any discrimination to participate in political opportunities. The next keyword is equality. The term equality means no section of society has any special privileges and all the people have given equal opportunities for everything without any discriminations. Everyone is equal before the law. Next keyword is liberty. The term liberty means freedom for the people to choose their way of life, have political views and behavior in society. Liberty does not mean freedom to do anything. A person can do anything but in the limit set by the law. Next, 10th keyword is fraternity. The term fraternity means a feeling of brotherhood and an emotional attachment with the country and all the people. The fraternity helps to promote dignity and unity in the nation. So dear students, the exam question is write a brief note on preamble of the Indian Constitution. भारतीय संविधान प्रस्तावना उपरे एक संक्षिप्त विवरणी बा गोटे रचना लेख बा गोटे लंग क्वेश्चन आसे तो तुम यही प्रिएम्बुल कौन प्रथम लिख प्रिएम्बुल हूँ इट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्रीफेस और मुखबंध ऑफ
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तापर प्रियम्बुल को भली लिखा जायछि भारतीय संविधान रे एई जिनस लिखिबो विथ द पीपुल लिखा जायछि तापर प्रतिटी जो कीवर्ड आम डिस्कसन कले जमी विथ द पीपुल ऑफ इंडिया विथ द पीपुल आमे भारतर नागरिक भारतीय लोक सोवरेन मीन्स सार्वभौमत्व तापर सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्षता डेमोक्रेटिक माने गणतांत्रिक रिपब्लिक माने गणतंत्र जस्टिस माने न्याय इक्वालिटी माने समानता लिबर्टी माने स्वाधीनता एवं फ्राटर्निटी माने भातृत्व भाव यही 10टी टर्म को आम विषय किछि किछि लिखा पड़ो ये लंग क्वेश्चन आसे कि बेले सर्ट क्वेश्चन पकेब केमी ना व्हाट डू मीन बाय फ्राटर्निटी भातृत्व कहले कौन बुझ व्हाट डू मीन माने मीन बाय सोवरेन सार्वभौमत्व कहले कौन बुझ तुम 2 मार्किया क्वेश्चन आसे तापर मते एतिक लिखिछि मु अल्प अल्प एभली लिखिछि मु यदि आसे एग्जाम रे व्हाट इज सोवरेन 2 मार्किया क्वेश्चन आसे व्हाट डू मीन बाय सोवरेन द टर्म सोवरेन मीन्स व्हाट जति मेंशन है जति तुम चाहिले एतिक लिखि परियो एति मेंशन कराई छि एति लिखले मतलब 2 मार्क पाई परियो यदि सोवरेन ऊपर पचारे तो सब विषय रे अल्प अल्प 2 मार्क पचारे तुम अल्प मते लिखि परियो तो एबे आसु जानिबा ए प्रियम्बुल ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन एमती आसीबो प्रथम यदि आसीबो शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क कोन आसी पारे आसु जानिबा प्रियम्बुल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर कोन कोन शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे शॉर्ट क्वेश्चन एमती आसी पारिबो व्हाट इज ए प्रियम्बुल बा व्हाट डू यू मीन बाय प्रियम्बुल आंसर होची ए प्रियम्बुल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलोसॉफी एंड ऑब्जेक्टिव्स इन ए कॉन्स्टिट्यूशन preamble represents the intention of its framers, the history behind its creation, and the core values and principles of the nation. The preamble basically gives idea of the following things or objects. First one is source of the constitution, second is nature of Indian state, third is statement of its objectives, fourth is date of its adoption. So preamble ए विषय पर हमको धारणा देता है तो 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आज प्रियम्बुल विषय एति आम लिखि पारिबा ओडिया रे कहले कोन हबो प्रियम्बुल प्रस्तावना कहले कोन बुझाए बा प्रस्तावना द्वारा तुम कोन कहबो चाहछ उत्तर होची एक प्रस्तावना होची बा मुखबंध होची एक डॉक्यूमेंट रो प्रारंभिक वक्तव्य जहाँ डॉक्यूमेंट रो दर्शन एवं उद्देश्य गुडी को व्याख्या करे एक संविधान रे यह संविधान रे यह संविधान रो निर्माता मानकर उद्देश्य फ्रेमर मान निर्माता मानकर उद्देश्य यार सृष्टि पछरे थिबा इतिहास एवं देशर मूल मूल्यबोध एवं नीतिगुड़ी को उपस्थापन करे प्रस्तावना मूलतः निम्नलिखित जिनिस बा वस्तुगुड़ी विषय धारणा देता सेगुड़ी होची संविधान उच्च भारतीय राज्य बा राष्ट्र प्रकृति यार उद्देश्यर विवृत्ति एवं संविधान ग्रहण तारीख ये विषय पर आमको प्रियम्बुल बा प्रस्तावना धारणा देता है नेक्स्ट क्वेश्चन आसीपारे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बुल प्रियम्बुल बा प्रस्तावनार उपादान गुड़ी कौन आंसर होची इट इज इंडिकेटेड बाय द प्रियम्बुल दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विथ द पीपुल ऑफ इंडिया प्रियम्बुल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन सोशलिस्ट secular and democratic republic. The objectives stated by the preamble are to secure justice, liberty, equality to all citizens and promote fraternity to maintain unity and integrity of the nation. The date is mentioned in the preamble when it was adopted, that is November 26, 1949. ओडिया रे आंसर लिखले पे केमती हम प्रस्तावनार उपादान गुड़िक कौन उल्लेख कर प्रियम्बुल बा प्रस्तावना द्वारा यह सूचित करा जायछि जे संविधान प्राधिकरणर उच्च भारतर लोकंक पाखरे अछि प्रियम्बुल भारत को एक सार्वभौमत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं गणतांत्रिक गणतंत्र बोली घोषणा करिछि प्रियम्बुल द्वारा दर्शा जायथिबा उद्देश्य होछि समस्त नागरिकଙ୍କ प्रति न्याय स्वाधीनता समानता रक्षा करिबा एवं
ଜାତିର ଏକତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ତାରିଖଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ବା ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା ନଭେମ୍ବର 26, 1949। ସୋ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ये थिला आज डिस्कसन दैट इज इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, दैट इज 5 मार्क क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर 1 दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिले आमे चाहिए ये फास्ट विषय जी पढ़ले ये विषय जब भल पढ़ी जा प्राय जहाँ 1 मार्किया 2 मार्किया लंग क्वेश्चन आसो आम ये प्रथम चैप्टर आराम से लिखिपर। निश्चय तुम जी मुझे पढ़ी निश्चय से गोटे 5 मार्किया और गोटे 2 मार्किया गोटे जमीते गोटे 1 मार्किया क्वेश्चन निश्चय पाइब। आहरी आगू आम आहरी 3टा चैप्टर अच्छी डिस्कसन कले तुम आहरी क्वेश्चन सब अटेंड कर 25 कि आज जी पढ़ेली तुम निश्चय मुझे विश्वास तुमने भल पढ़ुच निश्चय गोटे लंग क्वेश्चन 5 मार्क क्वेश्चन पाइब, निश्चय 2 मार्किया लंग क्वेश्चन और निश्चय 1 मार्किया गोटे बा 2टा क्वेश्चन निश्चय पाइब। तो तुम मैंने जदि मोर समस्त वीडियो देखिना तो मोर चैनल ना हूँ मोराल टीचिंग पीएनसी, मोराल टीचिंग पीएनसी, ये मोराल टीचिंग पीएनसी जाई तुम देखिपर। मोराल टीचिंग पीएनसी जाई तुम्हें समस्त वीडियो सेकेंड सेमेस्टर देखिपर। आज ये आम नेक्स्ट वीडियो आउ कि आलोचना करवा एवं जो 2टा लंग क्वेश्चन मैं डिस्कसन कली से लंग क्वेश्चन मुझे करना सब सब सर्ट क्वेश्चन ओडिया करी, लंग क्वेश्चन ओडिया करना। लंग क्वेश्चन ओडिया जदि हम मु वीडियो करी पुणी अपलोड करी तुम देखिपर। स्टूडेंट आज ये थैंक यू फॉर वाचिंग। आउ देखिए कौन कमेंट करिवार अछि कमेंट करि पार कमेंट बॉक्स रे। तुमर किसी प्रश्न थाए क्वेरी थाए निश्चय कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर एवं मोर चैनल को सब्सक्राइब कर। Dear students, any have any query you can comment. तुम मतलब डिस्क्रिप्शन में जाइए मोर टेलीग्राम चैनल को मतलब जॉइन कर पारिबो। इंपोर्टेंट जो वीडियो बनाऊँगी तुमको लिंक तुम पाइपर। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। बर्तमान रोची।